Hi guys, welcome to my channel Gorgeous Curls. I hope you all are good. So guys, in today's video, I am going to create everyone's favorite classic smoky eye look. So guys, अगर आप इवनिंग पार्टीज में जा रहे हो या फंक्शंस में, दिस विल एड इंस्टेंट ग्लैम टू योर लुक. और ये लुक क्रिएट करना भी बहुत इजी है. सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस ग्लैमरस एंड बोल्ड लुक. सो गाइज, कोई भी मेकअप करने से पहले यू शुड ऑलवेज प्रेप योर फेस एंड फॉर दैट यू शुड ऑलवेज यूज अ प्राइमर. और आज मैंने पहले ही प्राइमर यूज कर लिया है एंड फॉर दैट आई हैव यूज्ड दिस कलर बार का प्राइमर. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप विच इज टू फिल योर ब्रोज. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन आईब्रो पेंसिल. अगर आपके पास ये आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी डार्क ब्राउन आई शेडो यूज कर सकते हो. सो पहले मैं ये स्पूली से अपने आईब्रो के हेयर्स कॉम कर लूंगी. एंड देन फिल इट. गाइज, आपको ये ओवरडू नहीं करना है. अभी हमने अपनी आईब्रोज फिल कर ली है. नाउ लेट्स क्रिएट अ बेस फॉर अवर आई शेडो एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. ये आपको जेनरस अमाउंट में लेके अपने आईलिड्स पे अप्लाई करना है, लाइक दिस. I will just focus a bit. And then immediately blend it with a beauty blender. So now let's start with our look. So I am using this fruit pie palette from You Can Be. And in this, I am using this black shade for our smoky eye look. So इसके लिए मैं कोई भी ऐसा small flat brush यूज करूंगी. और इस पे हम थोड़ा सा आई शेडो लेके अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे. गाइज रिमेंबर, ये सिर्फ आपको आपके आईलिड पे ही ऐड करना है और आपको ये बहुत केयरफुली करना है क्योंकि ये बहुत डार्क कलर है और ये इजीली रिमूव नहीं होता. जस्ट डू इट पेशेंटली. On the other eyelid also I will apply the same.
एंड गाइज दैट्स इट, आपको इतना ही ब्लैक कलर यूज करना है। और अगर अभी आपको ये लुक और ज़्यादा इंटेंस वगैरह चाहिए तो आप उसके हिसाब से ब्लैक कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश एंड यूजिंग दिस डार्क ब्राउन शेड। सो मैं ये शेड बहुत ही कम अमाउंट में लेके अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी। रिमूव द एक्सेस and very lightly apply it on your crease. And while applying the color मैं इसे ब्लैक के साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। गाइस आपको ये बहुत जेंटली करना है वरना पूरा ब्राउन कलर रिमूव हो जाएगा। Like this I am doing on my other eye also. Now I am using this palette और उसमें मैं ये लाइट ब्राउन शेड लूंगी using this same fluffy brush, this shade, to blend the whole makeup. और इस शेड से जो आपकी ब्राउन की इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। एंड जो हमने डार्क ब्राउन कलर अप्लाई किया था हम उस पे ही ये कलर अप्लाई करेंगे। लाइक दिस, ब्लेंड इट वेरी जेंटली एंड स्लोली। सी ऑन द अदर आई आल्सो। So now guys there must be some fallouts, right? So उसके लिए हम लेंगे अपना कंसीलर and this small flat brush. And we'll just take a little bit of concealer on this brush. Like this. And हम इसे जेंटली यहाँ पे अप्लाई करेंगे लाइक दिस। On this side also just take a little bit of concealer and apply it. And blend it using the same brush like this. एंड हम अपना फिर से ये ब्यूटी ब्लेंडर लेके एक्सेस प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लेंगे। इससे जो आपका फॉल आउट होगा वो तो क्लीन होगा ही, बट आपका आई मेकअप भी शार्प लगेगा लाइक दिस। Now let's go to our Kajal, and for that I am using this 11 Kajal pencil. Now let's apply our mascara, and for that I am using this Maybelline का Hyper Curl mascara.
गाइज दिस इज अ स्मोकी आई लुक, सो आपको मस्कारा भी बहुत थिक अप्लाई करना है। So guys, this is our final eye look. So guys, as we have gone with our eye makeup very bold, so मैं अपने lips के साथ settle जाऊंगी. And for that I am taking this Elite Inca lipstick. This is the shade. So guys, our look is done. So I hope you guys enjoyed this look, and please do this look at home and tell me in the comment section how far you achieve it. And thanks for watching my video. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon below to get notification of my new videos. Thank you. Bye bye.